Okay, in the previous class we had concluded up to this point that we said we have Ssb Sc, that is single sideband suppressed carrier, and we said there is some disadvantage in this type of the modulation or generation, that is non-ideality of the filter. Do you remember that? Okay. फिर हमने कहा कि इस non-ideality को हमें obviously entertain करना है, and therefore we move on to the next modulation scheme known as Ssb Sc. लिखिए जरा, Ssb Sc का full form पहले लिखिए, vestigial sideband modulation. Vestigial मुझे बताइए पहले हमने इसकी डिमॉड्यूलेशन की, हमने एसएसबी की, जरा जल्दी से हम पहले एक डिमॉड्यूलेशन का हल्का सा एल्गोरिथम देख लेते हैं इसका। इससे पहले कि आप बीएसबी पे जाए, हेडिंग लिखिए डिमॉड्यूलेशन ऑफ एसएसबी एससी। Here we use synchronous detection. The method used, मुझे आपसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन याद रखना अगर मुझे किसी दिन आया तो ऐसा बता ठीक है, अगर ये ना तो देख के आओ। So be sure, and this is the nature of human beings. अक्सर आप देखेंगे जो गुस्सा नहीं करते, जो करते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर पाया हम रूम कर चुके हैं। Anyways, in this method, this is the method used for the remodulation. Reason being, यहाँ पे यही method है, synchronous detection की straight away. If you remember, मैंने आपसे कहा था, the part, the DC part, the more we reduce that DC part in AM, because look, remember this, all these are subtypes of AM. AM, amplitude modulation, is the primary modulation. Then you have DSB Sc, you have SSB Sc, and you have then last one VSB Sc. All these are subsets of AM. So that means my easiest, I would say simplest modulation is AM, and it is very easy to demodulate that also. Now as we try to play with some mathematics, we try to play with some methodology, our demodulation will become complex. Even in AM, when we started, we said when mu is less than 1 and when it is what? Equal to 1, then we can use a simple envelope detector for demodulation, right? But as we increase mu even in that method, envelope detector cannot be used. And envelope detector is a simple demodulator. ठीक है? We said then synchronous detection is to be used. Therefore, we understand as we move on with different methods, demodulation will become complex. And here we have only one as of now. We will go with this detection only, synchronous detection for SSB Sc. First thing first, we have our block diagram that we can use for demodulation. This is a multiplier block. Input to this is S of SSB Sc of T. The challenge to a synchronous detection is what? What is the challenge for a synchronous detection method? Huh? Synchronous detection वाले मेथड में चैलेंज क्या है हमारे पास? क्या होता है चैलेंज synchronous detection में? समझ समझ? हाँ? synchronous detection में क्या चैलेंज? Individual battles have to be won, you know. It's important to maintain your individuality. अच्छा, what is the challenge in synchronous detection? हज़रत तो बेने हज़रत? तो क्या दोल चला? शो चलता है? हाँ, आप बताइए. You are late in the तहसील, क्या को? जैसे न पाए, लेकिन late in the तहसील से गसान होती यार. बोल में जवाब बस याद करें. सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड में चैलेंज क्या होता है सबसे बड़ा? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द लोकल कैरियर. क्या हो गया आपको? Actually, my person particular the viewers also.
चैलेंज ये है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू केसेस ना. ओके, लेट्स गो अहेड. Is it in the frame? So this is a कैसा? Sige, hata mo. This is our signal which we had seen previously. I'm confused now. ये हमारा एसबी सिग्नल जो जनरेट हुआ है, इसके लिए हम दो केस देखेंगे. केस वन, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट. आई जस्ट राइट इट डाउन. This is on the right side, is it? Eyes on mode, please. This is our Ssb Sc. This is our local oscillator output. Multiplier block में था, उसका आउटपुट होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई. ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, which is noteworthy. Now let's see how we play with the equations. Therefore, the resultant signal will be AC square R comes over here. M of t cos square of 2 pi fct, quite logical, simple and straight, plus minus AC square
Okay. M cap of t sine of 2 pi fct into cos of 2 pi fct. Divided into 4. जी that's right. ये वाला कुछ डिवाइड आएगा. So I will not directly write low pass filter output. Final output आपका low pass filter का will be AC square M of T divided by and इसको हम एक एम्पलीट्यूड लिमिटर के थ्रू पास करेंगे. So I have to get the final M of T. ठीक है. ओके नेक्स्ट केस क्या है. केस 2. केस 2 क्या होगा. नॉट परफेक्टली सेम. वेरी नाइस. केस 2 यहाँ पे हम बनाएंगे. एडिशनली बस मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया. So this becomes not perfectly same. This is correct now. Multiplier output obviously has to be the same line again. No change over here. लेकिन यहाँ पे क्या क्या हाँ कॉस का हम जो बनेगी ना 1 प्लस कॉस ऑफ समथिंग 1 वाला जो होगा ना 1 वाला पार्ट उसकी वजह से ए सी एम ऑफ उससे मल्टीप्लाई. आप इस लेवल पे आप भी छोटे छोटे कंक्लूजन कर सकते हो. अगर नहीं तो कम से कम आपस में डिस्कस करो. कभी नहीं आया समझ तो मेरे पास आओ मसला नहीं. सो अंदर है कि राइट द आउटपुट ऑफ दिस मल्टीप्लायर आउटपुट जो होगा इसका AC स्क्वायर M of T by 4 cos of ये आपको सॉल्विंग आएगा ये 4 एंड ऑल दैट. दिस इज करेक्ट. आप एक लाइन यहाँ पे छोड़ेंगे, एक लाइन खुद फिल करेंगे एंड नेक्स्ट लाइन लिखेंगे.
ये इन कंटिन्यूएशन टू दिस है माइनस प्लस AC स्क्वायर m कैप ऑफ divided by 4 into sine of अब जरा यहाँ पे एक लिख दीजिए, इसके बाद ये हो गया यहाँ तक। लो पास फिल्टर आउटपुट will finally be like AC square m of t divided by 4 plus, by the way previous question में भी AC square m of t by 4 आएगा, आपके सॉल्व में 4 है, वहाँ पे 4 डिवाइड कर लीजिए, प्रीवियस केस में डिवाइड बाय 4 लिखे, वहाँ पे भी डिवाइड बाय 4 ही आएगा लास्ट। हाँ लास्ट में लो पास फिल्टर के आउटपुट के बाद यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पे 4 आएगा। आप ऊपर देखिए जहाँ से आप लोग डिराइव किया, आई लीव दैट पार्ट टू यू यूजिंग द प्रीवियस नॉलेज जो हमने किया ना सिंक्रोनस रिडक्शन, वहाँ पे चेक कीजिए हमने क्या फॉर्मूलाज यूज किए हैं। लो पास फिल्टर के आउटपुट से पहले ही असली 4 आएगा, फॉर्मूला से ही, इट्स नॉट लाइक लो पास फिल्टर कुछ कहेगा उससे पहले ही वो आएगा। आया समझ कहाँ फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूला यूज हो जाएगी, नहीं हिसाब से लिखो ताकि समझ आए। अब मुझे जरा बताइए आप अगर इस पर चलाइए किसी सिंपल चीज बिकॉज लेट आने के तासीरात होते हैं। आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, सबसे कुछ सुना आपने क्या बोला था जरा एक दो बातें बताइए। हाँ क्या वही कह रहा हूँ all of you will do it at your own places. Case A, इसका केस A बनेगा if phi is equal to 0, therefore output of या लो पास फिल्टर आउटपुट तब क्या आएगा, शाबाश, and case B when phi will be equal to 90 because we have to consider for both parts 0 for cos and 90. So we realize that there is no QNE. What was QNE? Because of QNE क्या होता था? QNE की वजह से क्या होता था आप बताइए, सोच के QNE की वजह से क्या होता था आप बताइए।
होता था? बस ये बात ऐसे ऐसे पता Q&E से क्या होता है? Not expected from my class that you don't know it. Output zero होता है. Quadrature null effect. When the angle is 90, output used to go to zero. Quadrature null. Null क्या दो? After null के zero. Right. So we realize that there, in this case, nothing like that is happening. Even when phi is 90 or phi is 0, in both cases you have an output which has m of t. In this case you have m cap of m of t. But what is m cap? What is m cap? Hilbert transform of m of t. So you can easily use an inverse Hilbert transform and you will get the m of t. But this m of t signal is there in your output. That is more important, right? So you will write very important point. Q&E is not present. Q&E is not present in case of demodulation of Ssb Sc using synchronous detection. टाइप क्या है? Vestigial sideband is the next heading. VES GIAL, vestigial sideband modulation. It is preferred, पहला पॉइंट इसमें लिखिए. It is used for video signal transmission. Video signal transmission ranging from 0 to 4.5 megahertz. It is used for video signal transmission. Video signal transmission. With bandwidth या signal ranging from 0 to 4.5 megahertz. इस पे आप हेडिंग लिखिए brief discussion. No side talks, please. No side talks. लगा है?
इसको भी हम जनरेट करते हैं DSB SC से ही. If you remember, we used to generate our SSB SC from a huh? Come here. Come out with the notebook. Sit here. Your signal strength is very weak today. What is wrong? You should have taken a good breakfast. Sit down. Or change the receptor antennas. What's been wrong there? Lost. This happens to be our DSB-SC signal. Now I will move slightly faster than what I have been doing so far. We know this is our Fc minus omega and this is minus Fc plus omega. On this side we have Fc plus omega and Fc minus omega. Now what we used to do to generate SSB-SC? Yes please? What we used to do after this to generate SSB-SC? Manya, what we used to do to generate SSB-SC? Nura is pakasu. Wala ko dog it. Agar se pakai ke hala to. After this, we used to use a filter with ideal response such as this, right? But now we realize this will be a practical band pass filter. Oh sorry, now since we are using not practical or practical, now we know that practical would have looked like this. And right, practical would have looked like this. And what was the problem in the final signal we had? हमारे पास एक incorrect, come on. Equation याद ही प्यारा है. You should have SSB-SC single side band. So it actually has to end here only at the center. So what was the problem is हमारे पास एक additional band of frequency आ रहा था, right? Which was this and this. हाँ? सही है ना? हम नहीं छोड़ना, हम इसकी बात करें. इसको छोड़ो. यहाँ पे जो आउटपुट आपका आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आपका आएगा वो कैसा आता था? आप उसको बनाने की जरूरत नहीं है. That used to come like this, huh? Then, right. We used to have not half. वो तो आइडियल के केस में था, लेकिन प्रैक्टिकल में वैसा नहीं होता. प्रैक्टिकल के केस में हमारे पास एक तो ये आता था and additionally ये वाला पार्ट आता था. So this was the actual problem, right? But this is still okay. But this thing is still okay. ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट होता था. Now, but for right, this is the general case. This is the practical filter. General signal, I would say. But for signals, but for signals,
यहाँ पे आप एक पॉइंट पहले समझिए, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, लिसन टू मी। यहाँ पे ये आपका अपर साइड बैंड है ना, एंड आपके 0 पॉइंट में एक अच्छी खासी डिफरेंस है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन इन सर्टेन केसेस वेयर दिस बैंड एंड दिस बैंड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वहां पे एंड रिजल्ट जो होगा दैट विल बी एडिशन ऑफ these, तो आप समझिए क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज होंगे, सो यू विल हैव वन बैंड एंड इसका ये पार्ट, ओके, यू विल हैव अनदर बैंड एंड इसका ये पार्ट। सो एंड रिजल्ट क्या होगा, ये वाला जो ये पार्ट और राइट वाला ये पार्ट है, वहां पे फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। नहीं इमेजिन नहीं कर पा रहे। देखिए मेरा ये वाला जो ये पार्ट है या चार्ट पर्टिकुलर इंटेंसिटी ना एम्पलीट्यूड मिला के, ये पॉइंट क्या है, इस फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड इतना है, आइज ऑन बोर्ड, इस फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड इतना है, ठीक। नाउ फॉर सच केसेस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल्स इज वेरी लेस, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 0 पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज वेरी लार्ज, ठीक। लेकिन कुछ केसेस उनकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। इन दोस केसेस व्हाट विल हैपन इज दैट यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी, सपोज दिस इज से -10 फॉर एग्जांपल, -10 का एम्पलीट्यूड है 20, ओके, और यहां से भी ये है -10, इसका भी एम्पलीट्यूड है 20, तो 20 + 20 क्या हो जाएगा 40। आपको समझ आया? आई रिपीट, देखिए ये वाला बैंड जो है ना आपका इस पॉइंट से इधर को, तो वो ये आ गया, इसको कोई एडिशन नहीं हो रहा है किसी और फ्रीक्वेंसी का, ठीक। हालांकि इधर भी हो रहा है किसी पॉइंट तक, लेकिन उतना हम थोड़ा एक्सटेंड ही लेंगे। अच्छा, इधर से जो आपका लेफ्ट वाला पॉइंट है कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ये वाला जो बैंड है ये वाला ओवरलैप कर रहा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के लिए सपोज इफ दिस इज -10, यू हैव 2 पॉइंट्स, यू हैव 2 एम्पलीट्यूड्स, बट दे विल ऐड अप। आपको समझ आया? आपके पास 2 एम्पलीट्यूड्स, 2 एम्पलीट्यूड के वैल्यू वो ऐड अप हो जाएगा, इट इज 20 + 10 becomes 30। सो एंड रिजल्ट इज आपके पास एक सिग्नल पीक बन जाती है which is of no use, or it is an additional amplitude. Do you get my point? So what we do now, this is the most important point. So what we do is we change the response of the filter. Now you draw this diagram. कितना बना लिया आपने? कितना बना लिया? So you will say this is the problem. Now this problem is solved by, आप लिखिए, this problem is solved by introduction of, this problem is solved by introduction of, this problem is solved by the use of vestigial sideband filter. By use of vestigial sideband filter having the response as given below, having the response as given below, having the response as given below. Now draw this, eyes on board, eyes on board. Now you will write response, अभी मत देखिए आप, response of VSB filter। VSB filter क्या है? इसका रेस्पॉन्स, ये वाला पॉइंट है, हम इस रेस्पॉन्स को इस तरह ऑल्टर करते हैं सच दैट एक पार्ट को हम ट्रंकेट कर देते हैं। देखो आपका जो आइडियल प्रैक्टिकल फिल्टर का रेस्पॉन्स है वो इस तरह से, ठीक है। जो VSB फिल्टर का रेस्पॉन्स है, हम एक पार्ट को काट लेते हैं। आपको दिख रहा है ये पार्ट कट गया, ये जो ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंजेस थी इनका एम्पलीट्यूड कम हो गया, ठीक है। नाउ सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड
इसके कहीं सेंटर से ही मेरा ब्लैक वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ वेस्टिजियल साइड बैंड फिल्टर। अब इससे देखिए होगा क्या, होगा ये जो मेरा ये वाला ट्रायंगल आता था ना, एक ट्रायंगल या हाइपैक्टल का, इट विल नाउ लुक लाइक दिस। ये जाता यहां तक लेकिन वहां नहीं जाएगा, उसके बजाय यहां जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला साइड यहाँ पे ये जाता वहां तक एक्स्ट्रापोलेट करके, लेकिन वहां नहीं जाएगा, वहां से कहां जाएगा, इस पॉइंट, ठीक है जी। नाउ फॉर सिग्नल्स where this bandwidth will be small because it's used for video signals, तो आपका जो एंड रिजल्ट होगा आपका ये वाला सिग्नल ठीक है, आपका ये वाला एक सिग्नल है, ये वाला दूसरा सिग्नल है। अब एम्पलीट्यूड एक्स्ट्रा कितना है, ये इतना जो एम्पलीट्यूड है एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड है कि नहीं। दिस एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड कंपनसेट्स, सो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्ट, ये जो ओवरलैप यहां हो रहा है एंड ये जो ओवरलैप यहां हो रहा है, दिस गेट्स एडेड अप एंड कंपनसेट्स फॉर द रिमेनिंग बैंड। So this is resultant VSB या resultant added strength। ये जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि देखिए आप ये समझिए इस पॉइंट को, आई नो बहुत सारे कंफ्यूजन है, बट आई विल जस्ट रिपीट फॉर यू, लिसन टू मी। देखिए हम क्या कर रहे हैं असली SSB SC, हमने कहा SSB SC में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, फिल्टर आइडियल, तो हमने SSB SC का ही एक थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर लाया, जहाँ पे जिसकी बैंडविड्थ सेम होगी एज SSB SC, जिसकी एफिशिएंसी वगैरह या वो पावर सेविंग है वो सेम है एज SSB SC, लेकिन जो नॉन आइडियलिटी का फैक्टर है, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, लेकिन जो खाली नॉन आइडियलिटी का फैक्टर है उसको हमने थोड़ा कंपनसेट करने की कोशिश, क्योंकि उस व्हाट यूज्ड टू हैपन बिकॉज़ ऑफ दैट नॉन आइडियलिटी, आई जस्ट रिपीट फ्रॉम हियर फॉर यू टू स्पेशली, वी आर ट्राइंग टू डू SSBSC, ओके, वी आर जनरेटिंग दैट फ्रॉम DSBSC, and we know in SSBSC how many side bands do we have? One only. That is why it is SSBSC. We know we save a lot of power because of this, right? Number one. Number two, we know we save bandwidth. But we have a problem of the filter. What is the problem? That due to the non-ideality of the filter, there is some extra part that is being added, and there is some extra part. So when we have signals where the bandwidth is, I would say, shrink down from starting from the 0 point, there these two amplitudes overlap. And I had already drawn a signal like this. We were expecting an output like this, but we get an output like this. Okay. Now this extra peak is used to be because of this part and because of this part. So the amplitude in these frequency ranges used to add up. Okay. Now we are using this advantage, adding up of this amplitude. We deliberately truncate the response, or I would say we cut the response of the filter in such a way. Hey, eyes on board. We cut the response of filter in such a way so that we have very low strengths for these particular frequencies. Okay, we have lost this strength. Is that okay? And from this side also we have truncated this part. So for these particular frequencies we have lost the strength.
Okay, this is eyes on board. This is the response of the filter. Now what happens because of this is, as we pass our signal, we were expecting our signal to be like this, extrapolated like this and then maybe like this. But no, we will get a response which goes up to this point and then moves towards this point with an extra amplitude over here, but some lost amplitude over here. Okay? And similarly from this side, we expected our signal to be of this nature because this is a triangle, no? This is a triangle. So we expected our signal to be like this, but we have truncated the response of the filter. So the nature of the signal also gets truncated. But in this fashion, such that we have some reduced strength in this part and some strength in this part. Now what happens because of this is that we get a response like this. Ideally I have made two triangles. These are two triangles. One is this, one is another triangle, because we only get one side band. No? For SSB we get only one side band. But due to this modification, so we will get a response such as this, with one part missing but an additional part over here, right? And for the another part we have some part missing and additional strength over here. So what happens? A compensation is done. For this left part, the right part does this compensation. Can you see that? Eyes on board please. For this part, or I would say for this triangle, the right triangle, the response triangle does compensation for this part. So I would say A. Eyes on board. What is wrong with you? For this part, A, my right wala part does the compensation. So A compensates for this part, okay, and B compensates for this part. So end result is kind of a sum of two triangles, which are genuinely two triangles, and not we overcome this disadvantage. How? We use the same disadvantage for our advantage. The addition of signals is being used for our advantage, but we have truncated the response in that way such that after addition they regenerate the string and we get the signal what is required. Is that okay? John, you will revise it very thoroughly. Okay? I'll specifically ask you some questions in the next class most likely. I would really urge you all, this is an optional assignment for you all, because maybe drawings in the class are not very clear than made by some automated software or so. So I urge you all to go for a simple search and make your diagrams again. Just search the diagram, or assignment is redraw the diagram of Ssb Sc by using some online platform or something like that, or a book. Okay? So we'll end here today.